What's up guys? कैसे हो? I'm all for work-life balance, but I think this is pushing it. हमने काफी ग्राइंडिंग करी है रात को बिता ऑफ स्ट्रीम और काफी कुछ कर लिया हमने, मतलब अनलॉक कर लिया, लेकिन स्टोरी नहीं खेला मैं। स्टोरी वहीं पे ही है जहाँ पे मैंने लास्ट कल कल खत्म करा था। कल काफी मैं साइड ट्रैक हो गया था लास्ट में स्टोरी से, तो आज वापस स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आप लोगों को स्ट्रीम के लिए मैंने कल रात को स्टोरी नहीं खेली और गेम बंद कर, वरना मैं कल रात भर खेलता था। ये गेम बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है यार, बहुत मस्त मज़े आ रहे हैं इसको खेलने। लोग श्राइन ऑफ डेप्थ, और ये अभी मेरे ख्याल से मिशन हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली कुछ देर में। अब स्टोरी मिशन चालू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई देखने वाला हो तो बढ़िया रहता, बट सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा FPS घटा ही दूँ। अब लोड कम हो जाएगा गेम पे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हिडन पाएगा, ये रहा ना। ओके, शुरू कर रहे हैं मिशन। The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed... Really? That quickly? You really are... Come to think of it, Mr. Big Animal God Barbatos, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. पैन गेमिंग कोनिचिवा कैसे हो भाई? Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. कैसे हो? ये मिशन मैंने सुना बेस्ट है, काफी अच्छा Can we है। attain power? But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados's wish for Mondstadt. Gene, you're My such a AR is right devotee. now 18। मैंने परसों शुरू करा था गेम खेलना पहली बार, अभी 18 पे पहुंचा हूँ। थैंक यू वीडियो को लाइक करने के लिए ब्रो। Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Aw, you flatter. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? बहुत जल्दी कर लिया एट 18। हाँ, मैं बस नॉन स्टॉप खेल रहा हूँ यार, रुका ही नहीं जा रहा इस गेम में। काफी कुछ कर लिया मैंने, सारा जियोनेशन अनलॉक कर दिया, सारे मतलब वो पोर्टल्स होते हैं ना जो स्टैचूज, सारे खोल दिए हैं। स्टेमिना भी काफी अच्छा हो चुका है 18 के हिसाब से। 5 दिन के हिसाब से 3 दिन ठीक है। मैं लगभग 6-7 घंटे की
लगातार खेल रहा हूँ, ऑफ स्ट्रीम भी खेल रहा हूँ, ऑन स्ट्रीम भी खेल रहा हूँ. But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. इसमें जो वो स्टॉर्म ब्रेक जो भी है, ड्रैगन को जो कंट्रोल करना है अबिस मेज, उसको ढूंढना है ना. कितनी दूर है ये? ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट फिर भी टेलीपोर्ट करेंगे. आप मोबाइल पे वीडियो बनाते हो, बहुत ही बढ़िया यार. दाद देनी पड़ती है मोबाइल पे बनाने वाले लोगों को. मैं लेकिन कंप्यूटर पे खेल रहा हूँ और मैं वीडियो नहीं बना रहा अभी, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ. Nowhere to hide. कैकिंग कुछ ज़्यादा ही ओवर पावरफुल है ना. Don't blink. Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's lair? Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. वो यार एरिया पूरा ब्लॉक्ड हो रखा है हवा के करंट की वजह से ना. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. वेंटी एक्चुअल में ही एनिमो गॉड है कि ये मजाक कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया अभी तक. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, पीसी और it is मोबाइल my दोनों पे ही responsibility खेलता to हूँ, लेकिन alter our मोबाइल पे course of खेलना action. आसान है मुझे लगता है. अच्छा यार, मोबाइल पे खेलना कैसे आसान हो सकता है पीसी से? पोर्टेबिलिटी की वजह से हो सकता होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट जितने अवेलेबिलिटी है पीसी के अंदर, जितने कस्टमाइजेशन है, उतनी मोबाइल पे हो ही नहीं सकती यार. If slaying him is our only choice, बाकी I will सबका अपना gladly तरीका become होता the है. knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? कैसे हो भाई The सिंक्ट्रॉक्स? Traveler, of course. The Traveler? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the मुझे same लगता है- maleficent power. हाँ वही आपको लगता है ना. आपको लगता है अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना चाहिए. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Devon is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Hey, nice plan. I am with you, Honorary. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. Nope. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. कंप्लीट.
थिंक स्टोरी मिशन को आप खेल सकते हैं क्या? अरे नहीं, क्या है तुम मेरे पास? कैकिंग? हाँ, अकाउंट रीरोल कर लो। उनको तो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तुम ही करके दे दो उनको। It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. जो मेरे कैकिंग क्लियर है ना, वो मतलब डीपीएस अच्छी है उसका, लेकिन उसका ना ग्लास कैनन है एक तरह से। वो Although this wooden हेल्थ बहुत lyre जल्दी is all खत्म I होती है have. उससे। I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Attack! Prepare yourself! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly trail camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Cut to the chase. The hilly trolls usually do not venture into areas with high element. It puts a heavy burden on. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plan. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. टूट नहीं गया था ये? मेरे पास It actually बारबरा, opened. You're बेडू, not entirely useless, Tone Deaf Bard. आइस एआर, फायर बॉय वाला है, दोनों का नाम भूल गया हूँ। फायर बॉय मेरे ख्याल से रेजर पाएगा, आइस वाला मेरे ख्याल से चिंग्यूंग पाएगा। बेडू मेरे को याद नहीं है कौन सा है। बारबरा तो ऑब्वियसली बहुत बेस्ट हीलर है। This is it. We are now entering Storm Terror. Watch yourselves. Let's move. रेजर नहीं है, 5 स्टार वाला है। आइस एके है। मेरे को खुद को इतने सारे कैरेक्टर्स अभी नहीं पता यार, सही बताऊं तो। ये क्या है? अच्छा, कोप वाला आइकन है। हाँ भूल गया, मैं भी भूल गया यार नाम सब काफी लोगों के जो यूज करते हैं ना, बस उन्हीं के रहते हैं थोड़े बहुत वो भी। आप रिक्वेस्ट सेंड कर लो मुझे, नंबर लिखा हुआ है नीचे कोने में स्क्रीन में, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा मिशन के बाद। इन सबको किल करना है क्या?
be fine. Don't. अमंगस With sword comes shadow. बोर हो गया यार अमंगस से मैं खेलेंगे जब थोड़ा बहुत इससे मन कम करेगा ना दूसरा गेम खेलने का तब अमंगस खेलेंगे I'll be fine. Speed of faith. जो आपके साथ अमंगस खेला था हाँ अमंगस काफी लोग खेलते हैं मेरे साथ मेरे को याद आ रहा है आप अमंगस खेले थे मेरे साथ I'll protect us. आईडी एक बार मैच मैं ये मिशन पूरा कर लूँ फिर ऐड कर दूंगा या इतने आप मेरे को सेंड कर सकते हो Let the show begin. जो आपके साथ अमंगस जो आपके चैनल का नाम पूछ रहा था गेम के अंदर अच्छा ओके ब्रो समझ गया मैं हाँ मुझे याद आ रहा है ना DMSR के था एक नाम It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. इसके मजे क्यों ले रहा है ये या बग था वो Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? ये नहीं कर पाऊंगा ना Either मैं way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the गेम Abyss ऑन Order होने than a few में mages. बहुत समय लगता है कोड PC AR मोबाइल पे why I दोनों tagged पे along सेम after आईडी all. है इसलिए सर्वर कनेक्ट पे Well, टाइम that and देता also for your हूँ safety. हाँ वो बात भी है मेरे को खुद को फेसबुक में लॉगिन Why करना am पड़ I रहा है so बार बार diligent? Too diligent for a poet. जब in भी fact. स्टार्ट करता हूँ गेम को मेरे को फेसबुक पे लॉगिन The person that made ईमेल आईडी और वो zero सब कुछ effort डालना to set पड़ता up है the dragon gears and email ID drink in the password. tavern all day. I don't get it. What part of you is the most diligent? I'll protect us. एग्जिट गेम करना लॉग आउट मत करना गेम क्लोज करते समय
मैं सीधा Alt+F4 करता हूँ एग्जिट गेम, लॉग आउट करता ही नहीं हूँ मैं। लॉग आउट करूँगा तो मुझे पता लॉग इन करना पड़ेगा। जब गेम क्लोज करना हो तो सीधा Alt+F4। Oh no! Ow! Oh no! क्या हो रहा है? Ready, steady, go! बारबरा का 40 पाना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे को जितना याद आ रहा है। शांतनु कैसे हो भाई? वो 3 स्टार यहाँ पे। Out of the frying pan, into the fire! ये 3 स्टार बाद में लेंगे, और तो क्या इलाज है, अभी मिशन पे फोकस करें। चेक करें बारबरा का वेपन 40 लेवल पे है। बारबरा का कॉन्स्टलेशन भी एक्टिव कर रखा है। मैं मेन कैरेक्टर को कम ही यूज कर रहा हूँ आजकल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ यूज करें, क्योंकि जहाँ पे भी यूज होना है वहाँ पे कैकिंग यूज हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर बस कैकिंग की हेल्थ बहुत कम होती है तब यूज करता हूँ मैं। जीन Look, a wind current! It might lead us to the top of the tower. जीन कौन सा वो है? 5 स्टार कैरेक्टर या कौन सा एलिमेंट है? Jin is a weird combo of Venti and Jin is wind. अरे यार क्या हो रहा है? पक्का मैं बग था, मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ। नहीं Oh, we can't advance any further. कटसीन The डाल दिया। ruins seem to be guarded by ancient seals. जीन विंड है, इससे अच्छा तो वेंटिल और क्यों ले लो।
क्योंकि वो तो मुश्किल है, वेंटी मिल जाएगा क्योंकि वेंटी रेट अप है। Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. टॉप पर चेस्ट है, These ruins even predate the existence of the Four Winds. देखते हैं टॉप पे भी जाके। ये Mondstadt कटसीन is तो a city खत्म है। without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. If we were trained to में? reintegrate all the parts, we should be able to get it working. अरे यार कॉपी करेक्टर नहीं चाहिए मुझको। कहाँ है? अरे यार मैं अच्छा यार मैं कहलाऊंगा। चलो कोई ना। We should be close to completing the ceremony for this actuate. Let's put the last part back and see. क्या करना क्या है? ये क्या भला है? पहले टेलीपोर्ट एक्टिवेट कर दिया गया। बजरकर बॉन गॉम्बलेट ये काफी काम आएगा। Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do. लेट्स गो। क्या था ये? Idea. Wrong. ड्यूड चीटिंग। अबे छोड़ना। क्या करूं अब? पूरा सील्ड है। Swing blade. टेलीपोर्ट सही दिमाग लगाया है।
एयर करंट यूज करूं। पहुंच पाऊंगा? अरे सही है बिल्कुल। अब two more light crystals. थ्री लाइट क्रिस्टल पर पॉइंट। अच्छा मैंने पार्ट स्ट्रीम गिरा इसको, स्ट्रीम से लगा। अच्छा ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। Wow, this light actuating ceremony does work magic. Let the show begin. It looks like one of the three halos above has now become solid ground. बारबरा की हीलिंग Let's बढ़ानी start looking पड़ेगी। for the next puzzle. श्राइन ऑफ डेप्थ ये रह गया, बस चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा मेरा। स्टार दिख रहा है तो लूंगा। Nomoculus, Enamoculus. ये चैलेंज लग रहा है मुझको, ना चैलेंज नहीं करना अभी। अच्छा एचपी इंक्रीज करना है उसका, ठीक है मैं समझा। मैं एनर्जी रिचार्ज और इंक्रीज इनकमिंग हीलिंग बाय 20%। मैं सोचा ये दोनों फाइटर करेंगे। अच्छा एक्शन पार्ट है तो मोबाइल से स्ट्रीम करते हो आप? मोबाइल से स्ट्रीम पे आपका अलग कर रहा था एक्शन पार्ट। एक 1000 HP वाला है, हाँ वो करूंगा। लकी डॉग होता है ना जो।
Flame Blade. इम्यून है यार ये। Come on, we can do it. एडवेंचरर जो भी, हाँ इसमें 1000 HP इंक्रीज हो जाएगा, वो कर लूँगा बाद में। Incoming. Don't blink. Let's dance. Hey. लेके कहाँ जाना है इसको? With sword comes shadow. Incoming. Hey! तीन एक साथ कलेक्ट कर सकते हैं वो, हाँ कर लिया मैंने ये पाएगा मेरे ख्याल से। एयर करंट कहाँ है? एयर करंट चाहिए तो या क्लाइम करूं? हाँ सुन हो रहा है। क्लाइम करना पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं लग रहा।
इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक को मैं जियो जियो चाहिए होएगा ना। फायर, अरे यार वैसे यार इलेक्ट्रिक का ऑपोजिट फायर, फायर तो नहीं बनता, इलेक्ट्रिक का ऑपोजिट जियो बनता है। अर्थिंग It seems 2 of the halos have become solid ground. One more and the seal to the top of the tower will be broken. इसके पीछे क्या, पहले ये देखो मैं। ट्राई एट होम नहीं, डू नॉट ट्राई एट होम होता है। ट्राई एट होम फायर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे कंबाइन करेगा? फिजिक्स के गुरु। स्टैमिना रिकवर हो जाओ। डीओ या जियो? जियो प्लस नहीं, डीओ प्लस लाइटर प्लस टेजर गन। वेरी गुड। Out of the frying pan, into the fire. एक्सप्लोजन से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये तो इजी था। जल्दी बोल गया मैं। Nice and spicy. Incoming. Restored some अरे यार मेज
यस। अब क्या? It's done! Paimon thinks we should venture onward from here. स्टार। एक जना कह रहा है हेल्पफुल कर लो, एक जना कह रहा है 10 बार मरोगे क्या भाई, क्यों डरा रहे हो? चार कहाँ है ये? वो ऊपर हवा में है। व्हाट द हेल, इतनी ऊंची करूंगा क्या मैं इसको? एयर करंट होगा ये। Windblade! Let's dance! बहुत है इतनी हेल्थ। आपने कल ही किया है। टेलीपोर्ट ही कर जाऊं? I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. वाओ, You bystander। shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. पानी पी रहा था actually। It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? एक करेक्टर बचा था, मतलब चारों मर जाएंगे। She really is a child of... Mondstadt is a romantic city without the... and its citizens enjoy the most freedom amongst them. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. कौन सा ड्रैगन? विंड है ना? विंड के ऊपर कौन सा भारी रखता है करेक्टर? No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed जियो him. ना? विंड पे जियो होएगा मेरे ख्याल से। And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. आर्चर तो है ही नहीं कोई, बारबरा यूज करनी पड़ेगी। Venti? विंड डजंट हैव वीकनेस। Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. वेंटी नहीं है मेरे पास। मैं यूज कर सकता हूँ वेंटी को? वाओ, तो वेंटी आर्चर है तो सही है फिर।
In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. एक और रख लूं। और कोई बढ़िया है तो नहीं? ना लेवल अप कर रखा मैंने। आर्चर मेरे पास क्या है देख लो। मेरे पास करेक्टर देखो कौन कौन से हैं। ये 8 करेक्टर हैं। मेन करेक्टर कैकिंग गोल्ड करेक्टर है, मेन भी है, 4 स्टार है, 5 स्टार। फिर बारबरा, टिंगलिंग, फिशल को करूं अपग्रेड करूं? कल रात को ही मैंने इसको पोल किया, मैंने अभी तक इसको देखा भी नहीं किसी पार्टी में डालने का, कुछ भी नहीं किया। इन दोनों को मैंने लेवल 40 तक कर भी रखा है अपग्रेड। सारे कह रहे हो फिशल करूं, मतलब लॉन्ग वो होंगे, लॉन्ग अटैक करने पड़ेंगे। मैं इससे इलेक्ट्रिक अटैक तो कर सकता हूँ कैकिंग से, लॉन्ग वाले। किसकी जगह करूं फिर मैं? इसकी जगह करूं क्या? शिंगलिंग की जगह करूं क्या? पिस्टल को अपग्रेड कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, और क्या। मेरी पार्टी होएगी ये सिर्फ पिस्टल कर लेता हूँ। हाँ भाई इग्निटर, पता है मुझे तो सिर्फ चल यही बोलने आया है कि तुमने कैकिंग पुल किया है। चलो कोई ना, अभी पीछे बहुत रहोगे फिर भी। तो शिंगलिंग की जगह यूज कर लूँ बस फिशर को, थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। फिशर थोड़ा बहुत तो यूज होएगी बाद में भी, प्लस वो मिल जाएगा मेरे को। तो इलेक्ट्रिक से मेरे को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। एलिमेंट रेजोनेंस इलेक्ट्रिक से क्या होता है? हाई वोल्टेज अफेक्टेड बाय हाइड्रोपोटी सुपर कंडक्ट ओवरलोड एंड हैव a 100% चांस टू जनरेट एन इलेक्ट्रो एलिमेंट पार्टिकल। इतना खास नहीं है बट चलेगा। कभी कहते हो फिशल को यूज करूं या ना करूं? शिंगलिंग की जगह फिशल को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अच्छा आप डेली आते हो, थैंक यू भाई, वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू। आप अलग अलग बोल रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं एक बार ना शिंगलिंग से ट्राई करता हूँ, हार गया तो रीस्टार्ट हो जाएगा ना इसी पॉइंट से। और तो क्या कर सकते हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सीधा ही बोल रहा है कन्फर्ट स्टॉर्म टेरर। करा फाइट करी जाए। मेन फाइट है, मैंने सुना है ये मेन फाइट। कमिट आने बंद हो गए हैं। Come on, enough procrastinating. Let's go. लेट्स गो तो लेट्स गो, देखी जाएगी। उत्तरी लेवल 26 देखी जाएगी, वरना शिंगलिंग को फिशल से करके उसके ऊपर कुछ देखूंगा। Look! There are 2 shiny spots on the Valen's back! They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. भाई FPS इंक्रीज करना चाहिए था, 30 FPS में नहीं हो पाएगा ये।
villain is getting away. But I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Shatter the condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. Condensed animo orbs to create acceleration currents. I know it's hard to tell amidst the barrage of bullets, but this is the only way. एक और फिर से आगे चला गया यार, चीटिंग है। मेरे को हील करना है। FPS ज़्यादा होता ना तो 2 बारी में ही खत्म हो जाता। हेल्थ गई मेरी। भाई अभी तो एक हुआ है। Hang on, just one more. हेल्थ चाहिए मेरे को, वरना कैसे करूंगा मैं। एक हुआ अभी तो।
फर्स्ट ट्राई में हो जाता होगा सभी का ये वाला तो इतना ना। Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Aim for the tainted blood clot on his neck. This dragon has strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the creatures will be hot. Be sure to watch your step. मर गया भाई। Aim for the tainted blood clot on his neck. चल जा। Don't blink. Cut to the chase. Oh, protect us! Aim for the tainted blood clot on his neck. अरे यार थोड़ा सा रह गया। एक आर्चर और होना चाहिए, सही कह रहा था। बारबरा को क्या हो गया एकदम से? हेल्थ कहाँ जा रही है यार? फ्री में हेल्थ जा रही है, कुछ मार भी नहीं रहा मेरे को कोई भी।
right. खड़े होने से हेल्प जा रही है। Aim for the tainted blood clot on his neck. This place is gonna collapse! तो ग्राउंड पे खड़ा कैसे नहीं रहूंगा मैं? ग्राउंड पे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा ना, हवा में थोड़ी उड़ सकता हूँ। मेरे पास बचा ही नहीं करैक्टर। खत्म हो गया क्या गेम? मतलब ये फाइट? It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. लास्ट में क्लच कर दिया क्या मैंने? मुझे लग रहा है खत्म होगी फाइट। मुझे और क्या लगेगा Is इसमें? this the power of the animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. कैसा था? मैं फर्स्ट टाइम कर गया The यार। storm terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of फर्स्ट टाइम कर Mondstadt लिया यार। and let them know that they are safe. To them it seemed और चीटिंग करी, मतलब मुझे पता नहीं था ग्राउंड में storm डैमेज terror होता है, फिर भी कर गया मैं। just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. ऐसा लग रहा है सीजन 1 का एंड हो गया ये, जैसे एयर वाला जो एरिया था ना पूरा का पूरा उसका एंड हो गया। सेकंड जियो वाला आएगा। मेरे को कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल भी। कुछ लिख रहे हो क्या आप? रिफ्रेश करूं क्या? You guys are back! The honorary knight returns triumphant! मेरे को लग रहा है रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि कमेंट आ ही नहीं रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लास्ट कमेंट है ग्राउंड पे खड़े रहने से डैमेज होगा, उसके बाद का कोई कमेंट नहीं होगा। हाँ आ गया। एंड ऑफ द विंड एरिया कट सीन है इसलिए कुछ नहीं बोला। अच्छा चलो फर्स्ट टाइम में कर दिया होगा। कह रहे थे ना 10 और मरेगा, मुश्किल है। We're back from tussling with Dvalin. और जो मेन कैरेक्टर थे वो तो कुछ कर भी नहीं पाए। You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. You're right, actually. Peace is hard won, and we shouldn't take it for granted. And this time, you're the one we should all be grateful to. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? Official shingling Beidou on a new account. ठीक है मेरे ख्याल से। While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. बट अगर 5 स्टार होता तो यूज करने लायक है। Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the hilly Charles were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon
remembers? When we first met, you... Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. I know. It's strange. Hilichurls aren't usually capable of coordinating like this. 4-star sword. Nice. 4-star sword मैंने पुल में एक भी नहीं निकाली अब तक. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. 4-star sword का फायदा नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको ना अपन असेंड नहीं रिफाइन नहीं कर सकते जल्दी से. बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा करेगी वो. They've taken over the Hilichurls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. हाँ 4-star वेपन रिफाइन करना तो बहुत ज्यादा हार्ड हो गया ना. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in... There's no time like the present. You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paiwan's... Awesome! Let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. मरे पड़े हैं सारे. मैं स्टैचू को विजिट कर जाऊं तो क्या मिला ये सारा? 4-star वो मिला क्या मेरे को? स्टैचू विजिट कर जाऊं तो मैं ठीक हो जाएगा मेरा. हेलिकल्स का इक्विपमेंट तोड़ दो. मैं नहीं समझा मतलब क्या हुआ. सही हो गया सारा. हेलिकल्स क्या होता है यार? बहुत ज्यादा वर्ड्स है इसके अंदर, गेम के अंदर समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है. Ad Astra... एक घंटा 40 मिनट. मून स्टैंड के सामने बैरिकेड है ना, वो तोड़ दो. उससे क्या होगा? ये सब कचरा है यार. एक तो ये बढ़िया है, कॉइंस बहुत है. देखते हैं उस तरफ जाएंगे तब तोड़ देंगे. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our... What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting clanmaster's speech. Storm Terror should have put up more of a fight. Second-rate items at Wagner's. Long live the heroes. Many trade routes have closed due to the Storm Terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables.
I cannot I hope they get the trade routes back up. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. We never should have forgotten his Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no. For that, we have you to thank. And as long as we have the Knights of Favonius, peace and... Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. हिमांशु गेमर कैसे हो? शिंगलिंग डुप्लीकेट एंड चोंगयुंग वो 3 कैरेक्टरों में एक सिंगल पुल से मिला था, उसके हिसाब से शिंगलिंग मिल गया तुम्हें और डुप्लीकेट बारबरा भी नहीं है लेकिन ना AR7 पे। हाँ AR7 पे 3 पुल्स होते हैं, ठीक है सही है। वैसे अगर एक 5 स्टार होता तो मजा आ जाते, फिर तो बहुत बढ़िया अकाउंट है। Me? Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what... That's why I'm here. Somewhere quiet. So what you thinking about then? अमंग अस तो आज तो नहीं खेलूंगा, आगे का बता नहीं सकता क्योंकि अभी ये वाला गेम खेलने रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये बीच बीच में गेम चेंज करते रहेंगे ना, क्या पता मैं राजी खेलूं शायद कल। इंडियन वाला गेम है ना, जो इंडियन डेवलपर्स वाला, इंडियन स्टोरी वाला। देखते हैं कैसे रिव्यूज है उस गेम के। अमंग अस तो अभी रुक के खेलेंगे थोड़े दिन। गुड अकाउंट टू स्टार्ट विद। अगर एक 5 स्टार या चाहिए यार, फर्स्ट 3 पुल में अगर एक 5 स्टार नहीं आ रहा तो रीरोल कर लो, क्योंकि 4 स्टार तो आगे जाके बहुत मिल जाने हैं। आगे जाके 4 स्टार बहुत मिल जाने मेरे हाथ से। एक 5 स्टार होना चाहिए शुरू के 3 पुल के अंदर। The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? To get to the bottom of it, I decided to wait. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churl's cries sounded from that same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... 5 स्टार let's call it अल्ट्रा fraternizing. हुए, बाकी 50 पर तो गारंटी है 5 स्टार लो। 50 पे गारंटी थोड़ी ना है, 100 पे गारंटी था। आई एम सचिन द गेम। क्रिकेट का गेम है क्या भाई? इस तरह के गेम नहीं खेल पाऊंगा मैं बिल्कुल भी। 50 पे थोड़ी गारंटेड था, 50 पे कैसे गारंटेड है? Through various means, I managed to gather some rather... The situation is this. The Abyss Order. They are The Abyss Order has a leader? 51 more for 5 star guarantee.
अच्छा 50 मोर पे गारंटी, वो तो गारंटी मिलेगी ना। मान लो फर्स्ट पुल पे 5 स्टार आ गया, फिर उसके बाद 10 ऑर्डर्स के मतलब 100 ऑर्डर के अंदर अंदर गारंटेड मिल जाएगा, तो और क्या चाहिए। 5 स्टार तो चाहिए चाहिए मिनिमम बढ़िया अकाउंट के लिए। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट 3 पुल में एक 5 स्टार आना चाहिए। 10वें पे गारंटी मिलता है। यूं तो 4 स्टार तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो ही जाएंगे। Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. 0.6% पर यूनिट का होता है और 5 यूनिट्स है तो 3% हो गया। 3% बहुत सही है यार। मैं पहले गाचा गेम्स बहुत खेला है। 3% में कितने मल्टीपल 5 स्टार्स लिया करते थे हम 3% में। 0.3414% चांस होया करता था एक करेक्टर का पुल का, और उसके पीछे दौड़ा करते थे, वो भी फ्री टू प्ले में, कभी पैसे नहीं यूज करें, और मिलता भी था। तो मुझको पता है गोचा गेम्स के अंदर कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है। रीरोलिंग तो मैंने बहुत करी है दूसरे गेम्स की। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर जो गेम्स थे ना, अल्कलाइजेशन और इंटीग्रल फैक्टर, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उन दोनों में कितने सारे परसेंटेज ड्रॉप होया करते थे। What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. एक बार ना इंटीग्रल फैक्टर में इतने सारे 5 स्टार करेक्टर हो गए थे कि जो मतलब 4 स्टार टोटल रेट होया करता था सभी का मिला के, और 1.11 समथिंग कुछ होया करता था पर करेक्टर का। उसके अंदर मैंने टॉप टियर करेक्टर्स पुल किए हुए हैं। फ्री रोल मिलता था डेली के 2 या 3 फ्री रोल्स मिलते थे, और उसमें मैं कई बार एक या दो मैं 4 स्टार पुल किया करता था सिर्फ 4% ड्रॉप रेट में, और 0.1 ड्रॉप रेट पर करेक्टर पे। रोहित कैसे हो भाई? व्हाट्सएप ब्रो। There's more. The Abyss Order has a name for this leader. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber had... I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. इतना मुश्किल नहीं है यार 5 स्टार लेना, सही बता रहा 1 हूँ। minute I see Kaya, थोड़ा सा the रीरोल next he करो, slipped away. अगर बढ़िया No अकाउंट sign बनाना of है a किसी guilty को। conscience. मैं पक्का 100% रीरोल कर रहा होता भी अगर मेरे पास 5 स्टार अकाउंट 5 स्टार करेक्टर नहीं होता। रोहित आपको मैं समझा देता हूँ, चलो। ये गेम ना, जैसे कैसे समझाएं, मतलब ओपन वर्ल्ड गेम है। कभी लेजेंड ऑफ जेल्डा देखा है? लेजेंड ऑफ जेल्डा मोस्टली है तो जापानीज एनिमे टाइप स्टाइल गेम, बट इसमें ना हर जगह पे आपको लूट, मॉन्स्टर, वेपन, करेक्टर, मतलब करेक्टर्स का टीम बिल्ड करना पड़ेगा। 4 करेक्टर है जिसमें एक आपका मेन करेक्टर शुरू से आपके पास होगा, और सबका अपना अपना वेपन होएगा। एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, जैसे एलिमेंट्स होते हैं फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक, अर्थ, इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे फायर वाटर से इफेक्टिव होएगा, फायर के ऊपर वाटर इफेक्टिव होएगा, वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्टिव होएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं और उस तरह से फाइट करना पड़ता है। बहुत एडवेंचर ओपन वर्ल्ड है जहाँ जगह जगह आपको नए नए तरह के अलग अलग मतलब अपग्रेड मिलेंगे। करेक्टर के 5-6 तरह के अलग अलग अपग्रेड होते हैं। आर्टिफैक्ट करना, वेपन लाना, रिफाइन करना, और फिर वेपन के अपग्रेड अलग होते हैं। सबके अलग अलग अपग्रेड होते हैं, उन सबका इकट्ठा फाइंडिंग करना। एक तरह से ओपन वर्ल्ड और वर्ल्ड क्राफ्ट की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, बट बहुत फन गेम है। जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस में नहीं होया करता था, अलग अलग अपग्रेड्स होया करते थे, हर अलग अलग चीज के एलिक्सर होया करता था, ये होया करता था। इस तरह से इसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और प्लस मिशन है, क्वेस्ट है, जिसमें एक्शन एडवेंचर गेम है एक तरह का। हाँ, क्लैश ऑफ क्लैंस में जैसे आप शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होया कर जाता था। शुरू में ये गेम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा फन है आगे जाके, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस में तो क्या सिर्फ वर्क लगता था, कोई एक्शन नहीं होया करता कुछ खास। इसके अंदर काफी एक्शन है, फाइटिंग है, सब कुछ है, एक्सप्लोरेशन है, और प्लस ग्राफिक्स इतने जबरदस्त है ना। और HDR अगर आपका पीसी सपोर्ट करता है और मॉनिटर HDR है तो आपको मजे आ जाएंगे आपकी आंखों पे, क्योंकि HDR हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन है ना, जो इसकी ब्राइटनेस इतनी जबरदस्त आंखों में पॉप आउट होती है। इसके कलर्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। Are you sure?
because that sounds like... But let's forget about him. I worked super hard today, and my But ये tummy game grumbled. editing बहुत Let's ज़्यादा है. order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, और please. सबसे बड़ी बात फ्री है. एंड्रॉइड पे खेल सकते हो, पीसी पे खेल सकते हो, प्ले स्टेशन वगैरह पे खेल भी सकते हो. उसको अपने की जरूरत नहीं है. पीसी और एंड्रॉइड दोनों पे चल जाएगा. को एक दूसरे के साथ खेल सकते हो. बस एशिया सर्वर रखना, दूसरे सर्वर के साथ नहीं खेल सकते हम. एशिया सर्वर रखोगे तो अपन एक साथ लोग सारे मिलके एक साथ खेल सकते हैं. आप मोबाइल पे हो, मैं कंप्यूटर पे हो, तो भी खेल सकते हैं. बहुत फ्री टू प्ले फ्रेंडली है. बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता गेम पैसे खर्च करने के लिए. बिल्कुल भी नहीं करता. कोई भी दिखाएगा भी नहीं गेम आपको शॉप कहां पर है. ढूंढोगे नहीं तो आप. और बहुत ज्यादा अनएडवांटेज कई बार क्या है, काफी सारे फ्री टू प्ले अकाउंट बेटर होते हैं पे अकाउंट से, सिर्फ लक की वजह से. Which should I choose? So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about her brother. हार्ड एक्टिंग बहुत ज्यादा यार ये लोल. बहुत ज्यादा मतलब सोच संभल के गेम खेलना चाहिए वाला. Huh. टाइम really? नहीं है और आप Oh, पढ़ाई well, कर रहे हो this is goodbye तो नहीं for करना now. चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत देगा ये गेम. क्योंकि पूरे दिन दिमाग में यही चलेगा गेम. मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो खेल सकता हूँ, बट इस चीज का ध्यान रखना है. पढ़ाई एग्जाम्स वगैरह है तो मत खेलना ये वाला गेम. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go, that's the spirit. Remember. All right. Now let's eat before it gets cold. जियो नेशन जा रहे हैं क्या अब? That was good. Note to Paimon. Amber's recommendations are worth the wait. बट स्टोरी मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई इस गेम के मेरे हिसाब से. मतलब ये जो एरिया था ना, विंड इंड एरिया नेशन, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You could always... Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head... होली लायर डे हेमेल, होली लायर हेमेडेल, पता नहीं क्या है. टंग ट्विस्टर लगता है. सात एरिया हो जाएंगे, बट उसके हिसाब से स्टोरी काफी स्लो छोटी थी. मतलब इस एरिया की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती होगी ना, क्योंकि जियो नेशन तो बाद में आया होगा ना नए अपडेट में. या शुरुआत से दो एरिया थे, दो नेशन थे. मेरे को तो पता नहीं, मैं तो परसों से खेलना शुरू करा है. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. दो नेशन शुरू से थे. अच्छा, एक एक करके डालने चाहिए इनको. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. बारबरा का फर्स्ट, यहाँ पे मेरे को कॉपी मिल जाएगा ना बारबरा का. ये फर्स्ट अपीयरेंस है ना बारबरा की. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the... Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. AR-20 पे मिलेगा. So, did you bring the Holy Lyre मैं with तो you? पीछे हूँ काफी. We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while. We, did bring it... Oh, don't worry.
I'm not here to collect rent. The the Holy Liar! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! कटसीन है तो पूरा प्योर प्रॉपर कटसीन है. Give it here. How could this Holy Liar, but how? Huh? Let Paimon see. No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the liar again. We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Liar. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? Tone deaf bard! Hey, don't go! टोन डेफ बार्ड मस्त लगते हैं बोल के. टोन डेफ बार्ड प्योर कटसीन था यार. ये इस तरह के कटसीन होने चाहिए, मजा आए. क्लिक करवाते रहते हैं मेरे से. क्लिक 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 क्लिक. ऑटो क्लिक का सिस्टम नहीं होता यार. डायलॉग पूरा होते ऑटो क्लिक हो गया. ये भी प्योर कटसीन है. आई At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. ला सिग्नोरा. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. मार देगा वेंटेगो. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. नींद आ गई भाई इसको. After much time has passed. What a very night! You're awake! Planet? Don't listen to her nonsense, Miss Barbara. Okay. Well, basically, I found you lying outside the cathedral unconscious and used my elemental powers to heal you. Paimon thinks you could still use a final splash of ice-cold water to the... That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean... I mean, Master Jean said to let him leave. How strange. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Windrise.
देख क्या रहा है? The wind amongst the branches is good. बाय भाई I हिमांशु। love the way it smells. एक्शन देख ही नहीं पाए हिमांशु तुम। पिछले वाला ड्रैगन की फाइट देखो, वो बहुत बढ़िया थी। जब तुम आए तो उससे थोड़ी देर पहले ही हुई। I said the exact same thing last time. ये तुम गूगल नहीं सर्च कर सकते एक्चुअल में कौन Why है do I only say these कैरेक्टर की things when I'm वॉइस down on my एक्टर। luck? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But as you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allergenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. कितना कंफ्यूजिंग सेंटेंस है यार ये। कितनी सारे वर्ड्स यूज कर रहे हो, समझ ही नहीं आया। It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. सर से उड़कर गया था। मैं तो अब सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं पक गया हूँ इनके and the one वर्ड person सुन that the सुन के। Fatui Harbingers all answer to. स्टोरी वाले वर्ड्स है उससे मतलब नहीं है, बस मेरे को थोड़ा The बहुत 7 don't always get along well, कैरेक्टर के but वर्ड्स से still, बस समझ लो वैसे I ही बहुत never है। thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I... 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have... What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all... The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. ये वाली जो पार्ट बोला ना इन्होंने बहुत बढ़िया बोला यार, ये वाला लास्ट की 2 लाइनें थी जो। Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. काफी लोग भूल जाते हैं बात कि ये वर्ल्ड इन्होंने इतना बढ़िया क्रिएट करा है। सिर्फ स्टोरी पे और फोकस मत करो, सिर्फ भागने पे मत फोकस करो, एंजॉय करो गेम को साथ में खेलते खेलते। टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वर्क की तरह मत यूज करो इसको, क्योंकि मेरे को कंप्लीट करना है। आराम से खेलो, मजे से खेलो। If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single club. Kaya shared some new intelligence. Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? हाँ, इन शॉर्ट गेम को रश मत करो, क्योंकि मैंने आज भी एक वीडियो देखी थी, एक बंदा मतलब बोर हो गया, इतना था
क्योंकि उसके पास ना सिर्फ लास्ट में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग करता है, ना ही वो कोई स्टोरी मिशन बचा ना ही कुछ। तो क्योंकि नए अपडेट आने में टाइम लगता है, धीरे धीरे खेलो गेम को, बट खेलो पूरे टाइम अगर टाइम है तो। ओपनिंग कट सीन पे पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को समझ ही नहीं आया था उस टाइम, गेम ही शुरू हुआ था, याद भी नहीं है मेरे को। हाँ, एम टेस्ट का वीडियो भी आया था ना, थोड़ी देर पहले देखा था मैंने उसका। They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for मतलब the गेम खुद Abyss. बोलता है ये बात। But that said, I have never heard of any such prince of the Abyss Order. I think so too, apparently. But if you want to chat, now's the time. A bard stays not up till the end. Dvalin remembered his duty as such. I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. पहले वाला बोर्ड जो है ना, वो कोई नया ही एलिमेंट पाएगा, देख लेना। मेरे को लग रहा है कोई डार्क एलिमेंट पाएगा कुछ। मेरे को अकाउंट रोल करने की जरूरत ही नहीं है यार, या तो किसी और को देना। मैं ये सोच रहा था कि मैं ना अपने व्यूवर्स को अकाउंट, जो नए व्यूवर्स जुड़ना चाहते हैं ना, कुछ अकाउंट से रिरोल करके उनको दूं। बट कोई ऐसा, जो भी मेरे को देख रहे हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली खेलता है गेम अभी। I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. पढ़ना है क्या ये? फाइल छोड़ूं ना? Well then, best be... 1.1 के बाद नए प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ रखेंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि नए प्लेयर्स फिर भी आते हैं, नए प्लेयर्स को अगर एडवांटेज नहीं देंगे ना गेम, तो दिक्कत होगी गेम वालों को। मुझको पता है ये फ्री टू प्ले है, कुछ ना कुछ देंगे ये नहीं देंगे तो नए और जेम्स दे देंगे या कुछ और नया ईमेल कर देंगे, करेंगे जरूरी है। ये गेम इंडिया में फेमस तो नहीं होगा, बट जो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ना, मतलब जिनको कार्टून से न, मतलब कहते हैं ना, कार्टून से ऊपर हंसते हैं ना, जो वो कभी नहीं खेलेंगे ये गेम। कार्टून एनिमे पे काफ़ी लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, वो तो कभी भी नहीं खेलेंगे ये गेम। उसके अलावा जिनको भी एनिमे से थोड़ा सा भी लगाव है ना, वो पक्का ट्राई करेगा कोई ये वाला गेम। उनके बीच में ये फेमस हो जाना चाहिए। नए डोमेन्स ओपन हो गए काफ़ी सारे, कमीशंस तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करना चाहिए मुझको? विश कर सकता हूँ क्या मैं? देखूं। साइड क्वेस्ट। हाँ, धीरे धीरे देखने लगे हैं एनिमे वगैरह भी। ये यार, वो इंडिया का जो खुद का प्रोडक्शन सिस्टम है ना, जो बॉलीवुड और
जो भी थोड़ा वेब सीरीज वगैरह है वो इतना मजे वाली बात नहीं है नई जनरेशन के लिए, पुरानी जनरेशन के लिए है। बट इंडिया में डिवाइड कल्चर हो रहा है, मतलब कईयों को बिल्कुल ही नफरत है एनीमे से रिलेटेड कुछ भी देखो, और कईयों को काफ़ी पसंद आता है। बट जिनको पसंद आता है ना वो बहुत कम है यार, मुश्किल से 10% भी नहीं है। अगर नई जनरेशन को लेंगे ना उसमें भी 10% भी लोग नहीं। मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा लोग, मतलब मैंने कल ये गेम स्ट्रीम किया ना, इसको देखने के बाद मेरे 2 सब्सक्राइबर घट गए। मजाक नहीं कर रहा, सही में घट गए 2 सब्सक्राइबर। थे ही है ही कितने, 153 थे, 151 पे हो गया मैं, सिर्फ इस तरह का गेम स्ट्रीम करने से। कईयों को देखते ही नफरत है एनिमे स्टाइल को, पता नहीं क्यों। सोचते हैं बच्चों का सिस्टम है, कार्टून है, बच्चों का है, मतलब मेरी बेइज्जती होगी अगर मैं कार्टून देखूंगा तो। कईयों के डिमांड में ऐसा आता है। मुझको भाई मेरे को एंजॉयमेंट से मतलब है, मुझे एंजॉयमेंट हो रहा है तो मतलब फिर मैं तो देखूंगा या खेलूंगा। कि एनिमे में जो एंजॉयमेंट है ना वो किसी भी प्रोडक्शन में नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। Immature people pretend to be mature by Come hating on, stuff. enough procrastinating. Let's go. मैंने बहुत नोटिस किया है, मतलब मुझे पता है, मैंने इस तरह से नोटिस किया है कि मैंने डेथ नोट जैसे एनिमे है ना, मैं सबसे पहले वो सजेस्ट करता हूँ कोई फर्स्ट टाइम एनिमे देख रहा हो तो वो कहते हैं यार जबरदस्त मजे आ गए डेथ नोट ये वो, फिर मैं कहता हूँ चल फुल मेटल अल्केमिस्ट देख, कभी ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता चल जाता है इसको एनिमे से प्रॉब्लम है कि कितना ही अच्छा क्वालिटी लगे। Welcome to the कहता है यार Adventurers कार्टून Guild. स्टाइल है, मजे नहीं आ रहे। मैंने कहा ठीक है यार, बात नहीं, छोड़ रहे दो, उनसे बात ही नहीं करता फिर मैं, खत्म। उस एनिमे से रिलेटेड बात करने का कोई मतलब नहीं उनसे। जो ये बोल देना कार्टून स्टाइल है, डेथ नोट देखने के बाद बोल दे कार्टून स्टाइल है, बस खत्म। कहता थोड़ा एक्चुअल होता तो मजा आते हैं। मैंने कहा यार ठीक है ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मत देखो। जिसको डेथ नोट में पसंद आ गया उसके बाद बोल रहा है कार्टून स्टाइल है और उसको फुल मेटल अल्केमिस्ट नहीं देख सकता ना, बस वो मतलब वो कभी भी इस तरह के गेम नहीं खेल सकता और कभी भी एनिमेटेड चीजें नहीं देख सकता। और ठीक है भाई, इसको जो एंजॉय आता है वो देखे, मैं कोई फेयर्स नहीं करता। बट मेरे को ना बोले, मैं अपना एनिमे देखूंगा, मेरे को पसंद है, या हम सबको ना बोले, हम एनिमे वालों को। इसको असेंड नहीं कर सकते ना। कॉन्स्टलेशन खोल रहे हैं मतलब रिफाइन हो रही है ना ये टैलेंट अपडेट कर सकता हूँ मैं। ये टैलेंट कैसे खुलेंगे? भाई नहीं अच्छा है यार, लाइव एक्शन बहुत बेकार था। जो ओरिजिनल चीज है ना वो ओरिजिनल चीज ही रहेगी, या तो एग्जैक्ट उसका कॉपी बनाए लाइव एक्शन तो मजे भी आए। हाँ ये 25 को खुलेंगे, हाँ मुझे भी याद आ रहा है। तो अभी मैंने जो भी अपग्रेड्स लिए वगैरह लिए उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना मुझको। इसके ऊपर आइकन क्यों आ रहा है? मैंने कुछ बनाने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। You'll find no second-rate items at Wagner's. कुछ अनलॉक हुआ है इसके ऊपर। क्वेस्ट ले लिया क्या मैंने?
हाँ करो, एक और अकाउंट रोल करो। लकी खेलने वाला था ना ये वाला गेम, लकी को दे देना अगर उसको नहीं मिला तो अच्छा अकाउंट। No wonder you're a master. आफ्टर द स्टॉर्म वर्ल्ड क्वेस्ट, एक ये है। अच्छा जी, चलो करते हैं वाला क्वेस्ट। I will not ड्यूड, quietly. ये अभी भी रहेगा क्या? मुझे लगा था यार फाइट खत्म होने के बाद ये चला जाएगा एरिया, ये बैरियर था। और ये चेस्ट क्यों क्लोज है अभी भी? Got lucky that time. I'll be fine. पता नहीं यार, मेरे को स्टार इकट्ठे करने हैं। लो भाई ऊपर वाले पे कर लेते हैं। स्टॉर्म टेरर के साथ अभी भी फाइट कर सकता हूँ मैं। कर लिया ऊपर वाले पे फाइट, फिर से ट्राई कर लो। मैं तो सोच रहा हूँ यहीं से यहीं चला जाऊँ, यहीं चल।
हो गए, यही था क्या? मैं तो वैसे ही फाइट कर गया यहाँ पे आके। मुझे क्या पता था यही वाला एरिया था। वेंटी गस जनरेट कर सकता है ना डायरेक्ट कहीं पे भी? क्रिस्टल और माइनिंग करना था जैसे यहाँ पे है, दिखाया तो नहीं इन्होंने। वो आइकन तो चला गया यार वहां से, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रीजनरेट होते हैं एवरी 3 डेज। ये वाले काम आएंगे? चढ़ जा यार, टेढ़ा है, चढ़ नहीं रही। मेरे ख्याल से बैरियर है, मैं नहीं जा पाऊंगा ना। इधर था फिर, ये वाला लोकेशन था ना। फ्लावर, मॉन्स्टर क्वेस्ट, ये पता नहीं क्या है। माइनिंग,
ठीक है। कस्टम मार्कर तो है बट उसका सन से क्या मार्क करें वो तो समझ गया मैं। सेव नहीं हुआ। अब किधर था याद है? यहाँ था ना। यहाँ नहीं किया था मैंने फाइट। ये वाले मिशन मेरे को बोरिंग लगते हैं यार। ये तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, मिशन में डालना जरूरी होता है इन सबको। AR-23 Hard work is all there is to the craft.
इनको लेवल पे स्टोरी मिशन नहीं रोकने चाहिए थे, या इनको स्टोरी मिशन ऐड करने चाहिए थे बीच में। पिलर्स थोड़े ढंग के, लेकिन पिलर्स जैसे हर गेम में स्टोरी मिशन, थोड़े पिलर्स स्टोरी मिशन होते हैं, बट थोड़े ढंग के होते हैं। ये तो बिल्कुल ही बोरिंग था, या बिल्कुल ही बढ़िया होता है। यही कर सकता हूँ मैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कम से कम पिलर के अंदर छोटा मिशन तो था, पिलर के अंदर बड़ा मिशन होता तो और दुखी करता है। चलो देख लेते हैं इसमें मजा आएंगे क्या। ल्यूए कल ओपन कर लिया था मैंने स्ट्रीम के बाद, पूरा ओपन कर रखा है। सारे के सारे जितने भी वो थे ना स्टैचू, सारे के सारे कर लिए, एक भी नहीं बचा हुआ। और वो जो एक पहाड़ पे चढ़ाई करनी थी ना, मूर्तियां सीधी करके, वो भी करवा दी थी। साथ में ही कोऑप करके करा था हमने, मैंने और थिंकर साइंस ने। I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for mo. It's the tale of... Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight hero. हर स्टेप में प्रिडिक्ट करना कि कौन है वो हीरो। देखते हैं कि इफ यू गेस लो। डार्क नाइट हीरो, वो कहते हैं आइस वाला जो है ना बंदा, पैच लगा रखे जिसने, कैप्टन है जो पायरेट का बेटा, क्या नाम है उसका, वो पाएगा। It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much... Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few... I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's what... Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight hero is more than just a groundless rumor. केया, हाँ केया जो भी नाम है उसका, केया वही पाएगा। क्योंकि लास्ट मिशन में एंड में उससे बात हुई थी और वो कह रहा था कि मैं अंदर देखता हूँ, और अंदर मुझे वो बाहर फाइटिंग हो रही थी, मैं अंदर देख रहा था, अंदर मेरे को वो मिले थे, उनको पीछे जा रहा था मैं। तो अब ये वाला मिशन आया तो मेरे को लग रहा है कि वो पाएगा। Anyway, if you want to know more, ask around in the plaza. Dark Knight hero. But just wonder who it could be. Once you're... Even if you are a close friend. गुड थिंकिंग, मेरे ख्याल से सही हूँ मैं।
किससे बात करनी है? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. You're right, I'm not. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have... What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night. Wow, so you're a nocturnal. No, I just... Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have an... It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just... Same difference. You are the boss of the... Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. एक क्वेस्ट आइकन दिख रहा है? मैं वही इसी पे स्टिक कर रहा हूँ। क्या नाम था उसका? के या जो भी है। मैंने नया एक्सेप्ट कर लिया क्या क्वेस्ट? क्या मतलब गैस टू? गैस कर चुका हूँ, मेरे को करना था तो। You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk. So, just... Whoa, slow down. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good, so I quickly hid. Hid? That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden, the way he crept up on those bad guys. Wow! Guess what I did next? I would probably have just gotten in the way as far as the Dark Knight. So instead, I headed to the Knights of Favonius' residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of... But it seemed... I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left... So you're saying whoever it is can't... Yes. But I just can't understand. Why would some... I'm sure they would warmly welcome someone of his ability. So, the point you're trying to make is... You don't know who the Dark Knight... Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about... मैं चेक किया, नाइट था क्या काया? मेरे को ये नहीं पता काया नाइट है क्या नहीं है। Welcome to Mondstadt. Moon pie. That's what I'll make tonight. What's wrong with me? Why can't I get him out of my mind? Hello? My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on. How did Night you know who I was Captain. talking about? अभी भी मेरा गैस वही रहेगा। Is it that obvious? Oh no. What am I going to do? If Master Diluc... Huh? What's Diluc? Well, I used to think Diluc would, but ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, Wowee! You saw the Dark... It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire.
but I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. अब लग रहा है डीलुक है मेरे को क्योंकि डीलुक का बार ओनर ही है ना वो, तो उसमें नाइट्स से नफरत करता है और उसके पास पैसा भी है और फायर भी है वो, तो अब डीलुक लग रहा है मुझको. Perhaps it was, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay then. Well, so all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of... But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, it's getting dark. Let's बार ओनर है ना वो. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. गया मैं. स्टैमिना फुल हो जा. The Dark Knight hero is Master Diluc? लास्ट में करंट कैसी थी अजीब सी. After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark... I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We saw... Now then, Mr. Dark Knight. Please stop calling me that. Seriously? Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original, like, Captain Pie. Pie? भूख लगी है इसको. Captain Pyro! अच्छा. Tell us, Captain Pyro, what happened? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions. Their persistence is unusual. Who would be... The Knights are, for the most part, an utterly... I cannot trust them to take this... That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service. ये interesting बात लग रही है. इसमें words अजीब से Because नहीं. I would like to ask for a favor in... Oh? What is it, Master D? You must keep my... Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am...
They appear to just be small timers. You should have no trouble. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have... Remember, don't tell a soul. Hey, you're just gonna leave us like this? पाइनोन थोड़ी मुंह बंद रखती है, इसके 1 सेकंड में निकल जाएगा मुंह से। Windblade! Windblade! सुपर स्पाई कैसे हो भाई? Greetings. I thought I heard something, so I came to Did you see anything out of the... Nope. Nuh-uh. Not here. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? Oh, the Dark Knight hero is... You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service. It's nothing. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you were... Oh! Why would you lie to me about that? Never mind. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. You know, some things are best not to... Duty calls. क्या हो रहा है? खत्म बस. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. मुझे लगा क्वेस्ट कंप्लीट लिखा है तो खत्म हो गया, अगला पार्ट शुरू होगा. उसके लिए मेरे को फिर एआर लेवल का हाई चाहिए होगा. फिर दिक्कत होती है. Oh, it's you two. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless, one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? रात को काफी देर तक खेल रहा था मैं गेम और अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा. Something और like इस टाइम अगर मैं सोया थोड़ी Thus, we देर are hoping to सर contact दर्द him होगा as soon मेरा. as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. If you find out anything at all... मैं उसे 2 घंटे और खेल के 6 बजे तक स्ट्रीम खत्म कर देता, फिर रात को नहीं सेकंड स्ट्रीम कर लेता मैं. Sent by the Abyss Order. स्लीप इज फॉर द वीक. सही बात है. This is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. मैं 4 बजे सोया था और 9 बजे उठ गया था. बाइनरी. अच्छा बाइनरी पे ज्यादा रखता है वैसा वो डीलुक.
नया क्वेस्ट अनलॉक हुआ है मेरा। बाइंड्री के अंदर नहीं गया मैं एक बार भी, अब जाऊंगा शायद। मालिक ऐसे खड़ा है। Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Avonius, and... I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come up. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. You really should join forces with the knights. Stay at the winery until this blows over. No. That would be playing right into... They know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making... If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of After all, no powerful organization wishes to be outdone by... Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys... There is a way. But for it to work, I need some more information. और हमें information लानी पड़ेगी. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's... Obscured portions? You mean the bits Paimon... It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the... Since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish, then? How do... Simple. When you don't understand something, I've already tracked down one of their strongholds. If you're... हाँ है, ये रहा. अंधा हूँ क्या मैं? This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes. Come on. There's no... क्या करना है? कौन सा सेलेक्ट करूं? ऊपर क्वेस्ट का आइकन है, मेरे ख्याल से ये पाएगा.
ऊपर वाला सिलेक्ट किया नंबर 1। प्रिंसिपल शा खेल के अजीब सा लगा हो गया क्योंकि हिडन चेस्ट वगैरह यहाँ पे आती थी प्रिंसिपल शा गेम्स के अंदर। उस तरह का इनका वो है आर्ट स्टाइल, मतलब जो वर्ल्ड स्टाइल है ना जो। इलेक्ट्रिक वाले जल्दी से नहीं मरते हैं। Nowhere to hide. Incoming. Hey. Speed of left. Hey. ये क्या है भला? ऐसे डिजाइन है। कॉम्बो करने सीख गया हूँ मैं। ये इम्यून है ना?
क्या हुआ? Cut to the chase. Retribution! Ready, steady, go! Prepare to be blown away! Income! With sword comes shadow. Out of the frying pan, into the fire. वाटर इलेक्ट्रिक Speed of light. This? Don't blink. Hey! वाटर के लिए कौन सा होता है? इलेक्ट्रो चार्ज तो है ही। I'll be fine. Booba, get them! Let's dance! Don't blink. Nowhere to hide. मैं पानी में खड़ा था और इलेक्ट्रिक करंट लग रहा था, इससे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गई। ये ध्यान रखना था मुझको। I am no knight of Favonius. Now start talking. I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid... You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyrovision to shoot fire from your hands? Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! I'll talk. I'll talk. The Abyss Order. We've amassed a force bound by a ship. They will march on the Mondstadt. That's everything I know. That's it? Well, I doubt you'd be... पानी में खड़े होकर इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी चाहिए ना। वो इलेक्ट्रिक था भी नहीं, वो वाटर था। मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so In light of what just went down, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people. अभी मेरी हेल्थ इतनी जीरो कैसे हो गई थी? उस वजह से तो हुई थी।
मेरे को बारबरा कॉपी बनाना पड़ेगा. पाइमन स्कैर्ड, तुम थोड़ा पीछे हो स्ट्रीम में, थोड़ा सा लाइव पे आ जाओ. स्ट्रीम या तो स्ट्रीम को 1.25 स्पीड पे चला लो, थोड़ा सा लाइव अपने आप आ जाएगा वो धीरे धीरे. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is... We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? No, that would send a signal that the Knights are in favor of the Dark Knight's hero's continued presence in our city, which we are not. Encouraging this kind of individual heroism undermines the Knight's authority. जो ये ट्रिक है ना 1.25 वाली स्पीड होती है, जो ये ट्रिक से ना जो सबसे ज़्यादा लाइव मतलब कवर कर सकता है. कई बार क्या होता है कि कोई गिव अवे कोड दे रहा होता है कोई लाइव स्ट्रीम पे, या फिर कोई ज्वाइन, काफ़ी लोग देख रहे होते हैं और कोई लॉबी ज्वाइन कर लो गेम खेलने के लिए साथ में, तो उसमें बताना होता है कोड. तो सबसे पहले सुनने के लिए ये ट्रिक से ना अपन यही कर सकते हैं, क्योंकि लाइव पे कितना ही क्लिक कर लो या फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कितना ही कर लो, उसमें उतना फास्ट नहीं जाता, उतना लाइव पे नहीं रहते, उतना मतलब क्या कहते हैं लेटेंसी कम नहीं होती जितनी 1.25 मल्टीप्लायर से हो जाती है. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Protection? He seems to be doing just fine. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark, it would only serve to further their nefarious Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan. Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be... इसको भी पता है. मैं पहले इसको समझ रहा था. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? कैसे हो भाई विजय? Winery and tell Master Diluc as soon as Paimonly possible. VJ, I'm MJ. What's up, bro? हेल्थ भी रिस्टोर हो जाएगी यहाँ पे एटलीस्ट.
नए क्वेस्ट इकट्ठे करो। ये क्वेस्ट इकट्ठे भी करने पड़ते थे, मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा अपने आप मिल जाते। Master Diluc, Paimon has something important. Yes. I should have known he would see this as the perfect. Sounds like there's a bit of bad blood between. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I am. All we need to do now is think of a counter plan. That won't work. It will only arouse the Knight's suspicion if that's what Kaya is. Patience. If they intend to monitor, we can use this to create. What's an alabla? An Alabla. alibi? If you want to find out, maybe you can do. Oh, come on. In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region. If you could gather some for me, I'd be most. यार मिशन कंप्लीट नहीं हुआ क्या? अलालाबाय गेम का आधा मसाला तो पाइमोन में है। यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा क्या? मैं अगर गेम बंद कर दूंगा, मैं इससे अब खेलने नहीं जा रहा हूँ, थक गया यार। Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great. I can't wait. So, are you certain the equipment can Oh my goodness. The winery owner himself is addressed. Don't worry, sir. It is always my honor to serve you. Huh? What's एक so ही अच्छा है। life-threatening about this? पहले से अगर हमारे पास इंग्रेडिएंट है तो वापस फार्म करने के लिए नहीं भेजते, वो यूज कर लेते हैं मिशन में। Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcake? No, not potent in terms of attracting customers. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, so I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold. So cold. Oh, Master Diluc. Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes... Wow! It really has a strong elemental... Sprinkle a little on the ground over there. Careful. यहाँ पे स्टार है। How long does it take before... Holy moly, it really does attract slimes! And even... It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc. Don't blink!
Let's discuss the plan some more after we've dealt with these... Incoming! With sword comes shadow. Ooh, such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for all right. So can you tell us what your plan is? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you? You're the only person... I have persevered alone. Now, I alone. Well, if you already made up your mind... But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? Hey, don't be so cheeky. I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Tavern. बहुत ट्रैवल करते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा मिशन। नक्की हुआ ये मिशन फिर। Nineteen to 6. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a... Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion... Ooh, Paimon wants apple juice. Apple juice. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Then I must regretfully ask you to come back when you can. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Even if you are a close friend. Huffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city's side gate and place the elemental bait. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the
one spots us. AR7 नया अकाउंट, टाइम टू रिरोल, देखते हैं क्या मिलता है। बट अब तो इग्निटर को भी नहीं चाहिए, लकी को देख लेना, मिल जाए चाहिए होता। लकी था ना जो सुबह गेम के बारे में पूछ रहा था। Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to over... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... Slimes. You see them all the time. What's the big We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life at it. Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon, but I have another matter to attend. Oh? The matter of your dandelion one? No, So this is how the Knights of Favoni, the Abyss Order, is encroaching on the city gates, and your response... It's like I've always said. The Knights are... Master D. Luke is right. I shall set off at once. May I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch D. Luke for me. Do not let him leave under... I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of... Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be... Even if you are a close friend... I can't give up. वापस जाना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गया है वैसे, चकमा देना और ये करना। Aha, cutscene. There you are. Dealing with you will be the easy part. सही ट्रेलर है यार, ये गेम का ट्रेलर ये होना चाहिए। Retribution! La la la.
Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. They look double STR इसलिए है. They look मस्त लगा वैसे मेरे को भी. Glad that's settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman is back yet? टेलीपोर्ट पता नहीं क्यों नहीं हुआ. It seems Huffman hasn't yet returned. We made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable... Master Diluc, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Is that so? But why now, of all times, for the love... Uh-oh, Huffman is getting suspicious. फ्री टाइम शिंगलिंग एक रीरोल में थक गया. वाओ. जब किसी को देने की जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है ना करने की. इग्निटर को तो वैसे ही मिल गया है. टैकिंग मिल गया और क्या चाहिए. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master Diluc? I mean, today's bartender. Yikes! He's asking other customers. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to... Oh. Never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as... How odd. Whew, that was too close. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Wine. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. लकी को 5 स्टार दो यार. ऐसे थोड़ी ना बेकार के 4 स्टार दोगे. माना फिस्चल है बट स्टिल Correct. बिना बारबरा के The तो नहीं Dark मजा आएंगे Knight ना. Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine... So, you plan to Come now, Diluc. You know me better than that. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go, and you did not disappoint. हाँ क्या बता उसका खुद का लक. लकी है अगले का नाम. क्या बता उसका खुद का लक चल जाए. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. डंका I must अकाउंट say, हो तो though, दिया भी one जाए. thing I didn't see coming is that उसको the शुरू mighty तो करने Dark दो. Knight hero would खेलने तो दो. actually need नया help अकाउंट from तो other people. AR7 से शुरू होएगा. मेरा फर्स्ट पुल में ही जब शिंगलिंग मिल गया मुझे. और शिंगलिंग है क्या? कैकिंग सॉरी कैकिंग. तो और क्या चाहिए? Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain my... Just one last thing, but... It had better be the... I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant. I hope you all have a wonderful night.
माउस का क्लिक आज तो कम कर रहा है, पता नहीं यार माउस कब तक आएगा मेरा। What was all that about? Thank you for all your help with this matter. Wow! I'm in the habit of working alone. In the future, if there's anything you ever need, मुझको 5 स्टार एबिलिटी दे दो, तुम्हारे को क्या चाहिए? To be continued. I need to learn to handle my booze better. Even if you are a close friend. Another. AR-19 होगा मेरा, 19 थोड़ा सा रह गया बस। बिल्ली ट्वेंटी पे वर्ल्ड लेवल अप हो जाएगा। वो 2 वर्ल्ड क्वेस्ट हैं। किधर है वो, सर्च कर सकते हैं 4 स्टार आर्टिस्ट। Adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. Add Astra. फिशल तो नहीं भेज सकता मैं, फिशल को भेज सकता हूँ क्या मैं? भेज देता हूँ ना फिशल को। नहीं, Add Astra. दोनों जगह फिशल को मिल रहा है। यहाँ पे चंग्यून को भेज सकता हूँ वापस, 25% लेस। और इसमें एक में तो फिशल को भेज सकता हूँ 25% लेस। ये गया। यहाँ पे चंग्यून को भेज दूँ या चाहिए मुझे? आइस मेरे पास, फिर काया ये है, काया इसके अलावा तो कोई है नहीं। 25% मतलब 20 घंटे की जगह 4 हिस्से 15 घंटे लगेंगे बस। काया को भेज दूं, 20 घंटे लगेंगे। लीसा को भी भेज सकता हूँ मैं एक पे। अच्छा, लीसा को ही भेज देता फिर, नक्की होता ना। एक ही बात है, काया का भेजना लीसा को भेजना। मेन तो चंग्यूंग को भेजने का मन था।
उससे जल्दी हो जाता है ना। क्योंकि आइस के अंदर सेकंड पे ही है ये चंगयुन, फर्स्ट पे क्यू है और क्वी बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, जो भी है। सेकंड पे चंगयुन ही आ जाता है ना आइस करेक्टर में। वर्ल्ड कस्ट कैसे मिलेंगे? विकी कर लूं है? विकी 4 स्टार के लिए कोई वो है क्या? फार्मिंग गाइड? Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. किस पे मिलेगा? विकी मतलब कैसे? चीची। Come on, enough procrastinating. Let's go. ठीक है, चीची बोल दिया। अब मैं विकी कैसे करूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। या अभी गेम बंद कर देता हूं, मैं थक रहा हूं। पहले ही बंद करने का मन था। कैचिंग। अच्छा, क्यू ची की तरह यूज होता है, चींग, CH। चलो अभी मैं स्ट्रीम भी बंद कर रहा हूँ, गेम भी बंद कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सर भारी हो रहा है मेरा। थोड़ी देर में खेलूंगा, एक्स्ट्रा चीजें करूंगा, क्योंकि स्ट्रीम करने का फायदा नहीं। फिर रात को स्ट्रीम कर लूंगा, देखता हूँ दूसरा गेम कर लूंगा स्ट्रीम या तो। In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there. बाय। That catches your eye.